ओके। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, टुडे इज द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी डिड फर्स्ट क्लास ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स on last Wednesday. Today is again Wednesday, and it is the second class of current affairs of science and technology, right? In the last class, we have discussed two or three things regarding some of the diseases like tomato flu, one of the major disease which is in news right now. And further, we have discussed about one of the important topic relating. नहीं, इस पर तो आ ही नहीं रहा है ना, यूट्यूब पर तो अब दूसरा ही चीज आने लगी। अरे राजीव जी, वो नहीं आ रहा है, समझ नहीं रहे। इसमें जैसे लिंक लगा होगा ना यूट्यूब का, तो यूट्यूब का लिंक कहाँ से खुलेगा? हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, यूट्यूब वहाँ फिर से खोलना पड़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चूंकि फिर से खोले तो वो नॉर्मल जैसे आता है ना यूट्यूब का प्रीफेस, वैसा ही आ रहा है, तो उसमें कुछ अलग खोलना पड़ेगा। हाँ, हम उस पर चले जाएं क्या, योर चैनल पर? नहीं नहीं, वीडियो वाला बटन, हाँ ठीक है। हाँ है ना। दबा दिए। हाँ खुला है, स्टूडियो खुल गया और ये हो गया। जो जो लाइव दिख रहा, हाँ जो लाइव दिख रहा है। उस पर मतलब उसको टिक कर दें? अच्छा, ठीक है, वो चलने लगेगा अब। खोल लेना उसको। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, ठीक है, मैं, हाँ मैं देखता हूँ, हाँ।
Okay, so guys, I hope that now I am audible and you can see me properly. Okay. Okay, then. Thank you, Shubham Patel. ओके, ठीक है. सो यहाँ से जो है अ, मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर, क्योंकि थोड़ा सा सेशन लेट हो चला है. तो हम सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं. इन द लास्ट क्लास I discussed you one of the major achievement by the National Institute of Ocean Technology, NIOT. I told you about that NIOT has innovated a special type of lantern that is powered by the saline water of the sea, right? So in this session, I am taking one of the important news from biotechnology, and that is related to the stem cells and embryo, and a formation of embryo. So very much you should be very much careful about this topic, because this topic is very important and this topic may be asked in the examination in the form of question, right? So first of all, we will see the news. What was there in the news? In the news, it is said that scientists uh, create world's first synthetic embryo with beating heart and brain. Got it? This was the news, and this news was flashed in various, you can say, TV channels as well as in the various newspapers. Particularly, here the main surprise is what the term synthetic embryo is used. आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां पर हम सिंथेटिक एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, और सिंथेटिक एम्ब्रियो क्या है इसको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू नो, टेल मी व्हाट इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो होता क्या है? व्हाट इज एम्ब्रियो? अगर आप ये समझ जाएंगे ना कि एम्ब्रियो क्या होता है, तो इसके आगे की चीज भी आपको आपके लिए समझना जो है वो आसान हो जाएगा, राइट? सो particularly you should know about this formation of embryo, the formation of embryo, in what stage of development embryo is formed. ठीक है? एक बार आप बताएं मुझे, अगर आपको पता हो. यहां पर मैं पैनल पर कई सारे नाम देख पा रहा हूं. शुभम पटेल इज देयर, वैष्णवी सिंह इज देयर, रवि कुमार इज देयर, ओके, मनोज पाठक सर इज ऑल्सो देयर. Okay, Rashmi Pandey is there. Varsha is there. Okay. So, anyone who are there, first of all, tell me what is an embryo? What is an embryo? First of all, we will see what is embryo. Then we will discuss that how a synthetic embryo can be formed. Okay. So, as you know, that embryo is such stage of development of a child in a pregnant woman when after the fertilization of sperm and ovum or egg, you can say,
zygote is formed, and that zygote goes for a repeated division, and after, when it reaches the stage of 32 cells, so it is now called blastocysts, and after the development of blastocyst stage, embryo is formed, and now it is ready to be established into the uterus of the pregnant woman. So embryo is that part of the development of a child after the fertilization of ovum and stem. I can see here that some of the persons have answered. Ravi Kumar has answered fertilization of male and female gametes. Okay. Ashu Ali, no, Ashu Ali is not answering. Vaishnavi Singh, the stage before infancy, when child is in the internal coverage of woman body. Shubham Patel has also answers. It is the first stage of development of a child. Uh, Pratush Kumar Vishwas, development inside fetus, and also one of the person named Vrinda. Okay, she has written here that developing body with fully developing organs like heart. Okay, one by one, I would like to clear you that embryo is formed in the developmental stage of the child in the pregnant woman, when, as I told you, that after the division in the zygote, after the repeated division in the zygote, it reaches the stage of 32 cells, when blastocyst is formed, and after the formation of blastocyst, it is converted into embryo, and then it is ready to be established into the uterus, right? So when the divided cell or the zygote, divided zygote becomes in such a stage when it is ready to be established into the uterus, it is called embryo. तो वहां पर आप इस चीज को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सिंथेटिक एम्ब्रियो. ये दूसरी चीज जो यहां पर आ गई है न्यूज में, सिंथेटिक एम्ब्रियो कैसे बनेगा. If you talk about anything that is made synthetic, it means that it is not natural. It is basically using not using the natural things which we generally use in its natural formation. ठीक है. तो कोई भी चीज जब सिंथेटिक बनाते हैं, जैसे हमने कपड़ा बनाया, सो कपड़ा बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने कपास का इस्तेमाल किया. ठीक है, पहले हमने कपास का इस्तेमाल किया, लेकिन वो कपास तो नेचुरल था. फिर हमने सिंथेटिक क्लॉथ्स जब बनाए तो उसके लिए हमने फाइबर्स का इस्तेमाल किया, जो कि सिंथेटिकली और केमिकली फॉर्म हुए थे. ठीक है, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारी सोच इस तरफ जाती है कि हम सिंथेटिक एम्ब्रियो की बात कैसे कर सकते हैं. नाउ उसमें भी यहां पर बहुत आश्चर्य वाली चीज जो है, सरप्राइजिंग थिंग इज व्हाट, that when this synthetic embryo is developed, so after certain stages, the embryo shows beating heart and the development of brain in it. So what does it mean, though it is natural or artificial? क्यों हम इसे कह रहे हैं कि ये सिंथेटिक है, क्या ये नेचुरल नहीं है? अगर नेचुरल नहीं है तो फिर हार्ट, बीटिंग हार्ट और ब्रेन जैसे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? And if it is natural, so why we are calling it synthetic? Okay, so इसको समझना जरूरी है. We have to understand this thing. Why it is called synthetic? It is called synthetic because this embryo is developed by not using sperms and ovum. Okay, sperm and ovum. Synthetic embryo is developed from the stem cells
unlike the natural embryo, which is developed after the fertilization of sperm and ovum. Okay, so without an sperm and ovum, a zygote is formed. That zygote goes into the stages of division, and after that, after those divisions, this embryo get formed. Okay, this embryo is formed. So this is the main crux in this system. Okay, but how these stem cells are used and from where these stem cells are taken, it is the uh, matter of question. So here you should remember that when this synthetic embryo is formed, so basically the stem cells are taken from the embryo of a mice, right? पहली बात तो ये है कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये पीछे मैंने शायद शुरुआत की क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया, लास्ट की क्लास में भी कुछ इसके विषय में बताया था आपको. बट अगेन दिस टर्म स्टेम सेल्स हैज कम एंड नाउ आई एक्सपेक्ट दैट basically you are fully confident to answer this question, that what is a stem cell. Can anyone answer? What is a stem cell? एक स्टेम सेल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, कैन एनीवन टेल? Okay, now answers are coming. Ashu Ali is writing stem cells is used for making a new organ. Okay, वैष्णवी सिंह ने आंसर किया cells having regenerative properties. वृंदा ने आंसर किया stem cells are cells having the capability to develop into any other cell, organ, etc. found in placenta, etc. Okay, Swati has also answered here that the undifferentiated cell which can be used to develop different parts. Among all the answers, I think that the answer of Swati Pawar is up to the mark, जिसमें स्वाति ने ये लिखा है कि undifferentiated cells होते हैं stem cells, and these undifferentiated cells are used to develop different parts, or they can be converted into differentiated cells, you can also say, and those differentiated cells are further used for the development of any kind of organ, right? Okay, वृंदा का भी जो आंसर था, it would be more or less up to the mark, आप कह सकते हो इसमें, है ना? She has not used the term undifferentiated, but more likely what she has written is basically almost nearest to the meaning. Okay, so stem cells क्या है ये समझ में आ गया. Stem cells जो होते हैं ये undifferentiated cells होते हैं. These are undifferentiated cells, right, that can be developed into any kind of differentiated cells. Differentiated cells का मतलब होता है कि different kinds of cells which are responsible to make any different kinds of organs या different kinds of tissues, you can say. So जब stem cells का
यूज करना है और उससे फिर एम्ब्रियो बनाना है, तो इसमें ध्यान रखना है कि when natural embryo is formed, natural embryo is formed by the use of sperm and ovum. When sperm and ovum get fertilized, so after the formation of zygote and the repeated division of zygote, the natural embryo is formed. But when stem cells are used, so those stem cells are fertilized with each other, or you can say they they would basically joined with each other to make such kind of embryo. ठीक है, तो जो भी synthetic embryo बनेगा, this synthetic embryo is basically using this stem cell. Okay, stem cell of what? Stem cell of mice. यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि here the embryonic stem cells are basically taken from the mice and then it is used to form this synthetic embryo. एक दो क्वेश्चन यहां पर आप जिसको ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं. सिंथेटिक एम्ब्रियो, synthetic embryo is also called एम्ब्रॉइड्स. ठीक है, एक तो ये याद रखना है कि एम्ब्रॉइड्स क्या है. यू कैन बी आस्क्ड दैट एम्ब्रॉइड्स आर नेचुरल एम्ब्रियो, एम्ब्रॉइड्स आर सिंथेटिक एम्ब्रियो, और उसके अलावा दो दूसरे ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एम्ब्रॉइड्स जो होते हैं वो सिंथेटिक एम्ब्रियो होते हैं. You can also be asked in objective question that embryos are formed from. अगर simply ये question पूछ लिया गया, so 4 different processes can be given in which one of the processes could be the answer, and this could be written like embryos are formed by the conjugation of two stem cells, two embryonic stem cells. ठीक, तो उसमें आप उन चीजों को भी ऐड कर सकते हैं. ओके, दूसरी चीज जो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि embryos are formed by combining embryonic stem cells and two other cells taken from a mice. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स तो लिए ही, लेकिन इसके अलावा दो डिफरेंट सेल्स भी लिए. द टू अदर सेल्स, अमंग द टू अदर सेल्स, ऐसा लिख सकते हैं. among the two other cells, one of the cells is taken from the placenta of the mice, while another cell is taken from a sac.
ठीक है, ये कैसा सैक है? A sac in which the embryo develops. ठीक है, गॉट इट? ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये किस तरीके से जो है वो बन रहे हैं। तो ये बन रहे हैं किससे? दो तरीके के सेल्स और उसके साथ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को जो है वो बेसिकली यूज किया जा रहा है। पर्टिकुलरली इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है और उस कॉम्बिनेशन से जिस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, the combination and the development of embryo is basically taken place in the lab and in a particular kind of dish where all these three kinds of specialized cells are combined with each other, and so that an embryo is formed there further. Okay, क्यों ऐसा किया गया और कहां किया गया ये भी जानना जरूरी है। Here you should remember that this experiment and further the development of synthetic embryo was done at Cambridge University. ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है वो इसको बनाया गया यूजिंग पर्टिकुलरली थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, यूजिंग पर्टिकुलरली द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से सेल्स हैं ये आपको बता दिया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं और दो अलग तरीके के सेल्स हैं जिनमें से एक माइस के प्लेसेंटा से लिया गया और दूसरा जो है वो एक एम्ब्रियोनिक सैक से लिया गया, यानी ऐसा सैक जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये हुआ, क्यों किया गया इसके पीछे भी रीजन है, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज व्हाट, दैट due to the development of such kind of synthetic embryo, the scientists wanted to know about the complication during the development of a natural embryo, है ना। कोई भी नेचुरल एम्ब्रियो जो होगा उसके डेवलपमेंट के दौरान सिंपली कई बार ये देखने को मिलता है कि इन सम ऑफ द केसेस the embryo when get established into the uterus, it is not completely developing there, right? It basically got hindered by different kinds of processes, and sometimes it is seen that a premature, you can say there, a premature death of the child, okay, or you can call it as the death of embryo takes place there, okay. So in that way you can say, in that way the different complication is seen there, and to understand such kind of complication this synthetic embryo was made. When this synthetic embryo was made and after its establishment into embryo, it is seen that how
the brain develops in it, how the heart develops in it, and how the heart starts beating there. First of all of you know that when an embryo get established into the uterus, the first organ which is formed and whose characteristics is observed by the doctors at the age of 2 months, right? So the first characteristic is the heartbeat. So when heart starts beating in the natural embryo, doctors become confident about the natural and you can say healthy development of embryo. Okay, but if it does not take place there, so particularly it is seen that embryo get hindered by different kinds of processes, and premature death of child can be seen there. Okay, so the main purpose of the development of this synthetic embryo is what you can write there. Sorry. The main purpose of the development of synthetic embryo is to know about different complications takes place take place during the development of नेचुरल एम्ब्रियो. ठीक है, नेचुरल एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को समझने के लिए this results also guide us also guide us for the repair and development of for the repair and development of what? As all of you know that different kinds of organs can be made by the use of what? By the use of stem cells. And when different kinds of organs are developed through an embryo, okay, so it would be more likely natural, and that's why it could be used for the transplantation of any kind of organ which is required in a person. So it is used for the repair and development of synthetic human organs, synthetic human organs for what?
human organs for transplantation. Right? So what questions could be asked? Okay. What question could be asked here? Questions could be asked here that if, first of all, what is a synthetic embryo? Yeah, what do you mean by a synthetic embryo? How it helps to reveal the mystery of embryo. What is the mystery of embryo? The mystery of embryo is that why some of the embryo become failed to be developed into the uterus and why some get successful in the development. So this mystery get revealed by the use of this synthetic embryo, since it is not formed by the use of sperm and ovum. So obviously it is not developed into a particular child, but certain development of different kinds of, you can say, body organs, or particularly the beating heart, or a particular brain, right? So it can be assessed that what stages or what things आर कमिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो. डॉक्टर्स जो है उस पर ज्यादा नजर रख पाएंगे, उस पर ज्यादा जो है वो काम कर पाएंगे. एक्चुअली ये चीज इसलिए भी डेवलप की गई कि यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग कि व्हेन वी वर्क ऑन द अ पर्टिकुलर नेचुरल एम्ब्रियो, और वहां पर नेचुरल एम्ब्रियो पर काम करते वक्त सपोज किया कि किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि चाइल्ड का प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है, ठीक है, तो या फिर अबॉर्शन हो जाता है, तो उस केस में ये चीज अनएथिकल हो जाएगी. बट इफ इट इज डन ऑन द सिंथेटिक एम्ब्रियो, इट इज नॉट अनएथिकल. और ह्यूमन के साथ तो बिल्कुल नहीं कर रहे, अभी हम जो भी कर रहे हैं वो माइस के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को लेकर कर रहे हैं. तो अगर माइस के केस में ये चीज सक्सेसफुल होती है, तो फिर हम ह्यूमन के लेवल पर भी जो है स्टेम सेल्स को लेकर इस पर काम करेंगे, और फिर उस डेवलपमेंट के स्टेजेस को ऑब्जर्व करेंगे, जो कि डेवलपमेंट का स्टेज हमें नॉर्मली एक ह्यूमन में देखने को मिलता है. राइट? ओके. तो ये चीज जो है वो आज आपके न्यूज, पिछले वीक के न्यूज में रही है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा गौर से इसको ध्यान में रखेंगे. यूके के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पर जो है वो काम किया है, और स्टेम सेल रिसर्च जो है इस पर कई सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं. स्टेम सेल्स के को लेकर कई सारे और फैक्ट एंड फिगर्स भी जो है वो आपको पता होने चाहिए. कुछ फैक्ट्स जो स्टेम सेल्स को लेकर है, जैसे स्टेम सेल के रिसर्च में नोबेल प्राइज जो है वो किनको मिला, स्टेम सेल रिसर्च के अंदर स्टेम सेल से क्या क्या चीजें बन सकती हैं. ऑल दिस थिंग्स आर the basic things which you should know, and we will discuss all these things uh, uh, in the classes of science and technology, where we will discuss biotechnology, and regarding stem cells I will tell you all the basic things. Okay, तो वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी. करंट अफेयर्स में चूंकि छोटी छोटी चीजें हैं, साइंस एंड टेक में कई बार ऐसा होता है कि एक वीक में कई सारे डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं. बेसिक थिंग ये है कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग क्या है, सिंस दिस इज द मेजर टॉपिक रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी, तो इसलिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. ठीक है.
ऑब्जेक्टिव में कई तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि एम्ब्रॉयड्स को लेकर भी आपके पास क्वेश्चन मिल सकते हैं. इट वुड बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग the development of which kind of cells are used in the development of embroid या in the development of synthetic embryo. तो वहां पर भी आप जो है उनको याद रखेंगे कि सेल्स कहाँ कहाँ से लिए गए. 3 तरीके के सेल्स लिए जा रहे हैं, लैब में इनको डेवलप किया जा रहा है, पर्टिकुलरली डिश में, है ना. डिश में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, डिश में ही वो सेल डिवीजन हो रहा है, और डिश में ही हम डेवलपमेंट के दौरान ये देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ हार्ट बीट क्रिएट हो रही है और किस तरीके से ब्रेन क्रिएट हो रहा है. अभी तक तो इन्हीं पर बात हुई है. एक्चुअली जो एक न्यूज़पेपर में और चीजें मेंशन थी, वहां पर यह भी बताया गया कि ऑर्गेनोजेनेसिस, है ना, सिंथेटिक एम्ब्रियो दैट डेवलप्स विद ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब सीधे तौर पर होता है कि वहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स का जेनेसिस यानी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है. ठीक है, तो उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा, उस पर भी चीजों को देखना पड़ेगा. राइट. ये आज के करंट अफेयर्स की क्लास में मैं इतनी चीजों पर छोड़ रहा हूं आपको, क्योंकि और पिछले वीक में बहुत ज्यादा कोई न्यूज नहीं थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. जो भी चीजें आ रही थी वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी. तो इस पर आप थोड़ा सा थ्रस्ट देंगे. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वेंसडे को जो है वो हम इस पर और ज्यादा बातें करेंगे. कुछ और जो नए करंट अफेयर्स आएंगे उन पर बातें करेंगे, उनके टॉपिक्स को लेकर. और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिले जिन पर आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर पाए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, and see you in the next class with the more topics of current affairs in science and technology. Thank you.